Hello everyone, Agri-tourism and its future. Video lesson 15th. As you can see, the content for the course would be rural tourism marketing, digital technologies for rural tourism marketing, developing clusters for rural tourism marketing, benefits and challenges of rural tourism marketing, and agri-tourism and its future. The course would include total 20 video lessons. In this session, the content would be agritourism and its future, difference between conventional and agritourism, significance of agritourism, agrotourist, agrotourist product and services as well. In this, agritourism and its future consists of introduction to agritourism and its future, agritourist meaning and their definition, agritourist product and services. Now, let's start with the meaning and definition of agritourism and its future. Agritourism is a style of holiday that is normally spent on a farm. The term agritourism is understood differently by tourists and provider of agritourist services. For a tourist, agritourism means familiarizing oneself with the agriculture production or recreation in the agriculture environment, or it may be include any opportunity to help with the farming task during the visit. However, this definition did not fully rendered when the term agritourism means to people providing agri-tourist services. In fact, agritourism is a term introduced by a representative of supply party which are representing by interest of farms providing agri-tourist services. This result in a considerable extension of the term to all the activities related to providing services for tourists and holiday makers as well. Therefore, the entities providing agritourism services include in the term agritourism various form of accommodation industry. There are no reason why agritourism and rural tourism should not be distinguished. Now, let's have a look at the differentiate between agritourism and conventional tourism. There are total three main features that differentiate between agritourism from conventional tourism. The first feature is the possibility to satisfy human needs with the practical participation in the process of product diffusion in the life of rural family and in rural community as well. The second characteristics quality of agritourism in relation to conventional tourism is the possibility to satisfy the human conservative need within the farming production and ethnography as well. The third feature of agritourism is the possibility to satisfy emotional need, which is the willingness to have direct connection with the domestic animal, plants, animal products, and the product of processing, and as well the need to experience the idyllic countryside associated with atmosphere of rusticity, silence, sound, or even smell of the country and farm also. Now, let's have a look at the significance of agritourism. If we are talking about the significance, the economic and social importance of agritourism can be considered in many aspects. For example, the macroeconomics aspect, the regional economic aspect, and microeconomics aspect as well. Primarily, the phenomenal fact that development of agritourism are first, low farm income, second, urbanization, third, redistribution of urban people income to agri-tourist farm and in the consequences to all the rural people. Fourth, the state of rural infrastructure and level of urbanization. And the fifth and the last one is policy to local self-government. The most frequently listed reason for all the farm in the farmer income is the 1990s, which would include the decline of price relatives.
the segmentation of the production due to lack of demand and hence the incomplete use of production potential of agriculture and the fall in the income from agriculture production, the limitation of subsidizing agriculture from the budget, and the increasing liability of farm household, as well as the consideration income in the unemployment rate, the slower tempo of overall economy, and the deteriorations of economic situation in many areas. Now, let's have a look at the meaning of agri-tourist. A common characteristics of agri-tourist is their willingness to stay on a farm, observe production process, and have contact with the animal, etc. Agritourism is a primarily oriented towards city inhabitants, especially from big cities and medium-sized towns. From the point of view of agritourism, it is very important to learn the characteristics of city inhabitants. The city population can be divided into various population of small and medium-sized town and also that of the big cities as well. Bigger the size of a town or city, the higher of the percentage in the inhabitant interested of agritourism. The main consumer of agri-tourist services tend to be people with the university or higher education institutions and their children as well. Depending on the time of staying on the farm, agri-tourist client can be grouped into the following segment, which would include the first one is momentary agri-tourist, second is one-day agri-tourist, third is agri-tourist staying at overnight, fourth one is weekend agri-tourist, fifth is holiday makers. Now, let's see about agri-tourist product and services. This topic discusses the services, product, imponderables, and agri-tourist attractions. Imponderables mean unmeasurable values which refer to agri-tourist space such as the beauty of the landscape, fresh air, or rural architectures as well. Imponderables thought not a service or product. It is like facilitate the marketing process in agritourism. Agritourism also satisfy human, emotional, aesthetic and social needs, especially the longing for rural sincerity, fresh air and landscape undistributed by the architecture. Agritourism satisfy the human emotional need for contact with animals. There are total 9 categories of agri-tourist product and services, in which the first one is agri-accommodation, second, agri-food and beverages, third, primary agri-tourism, fourth, direct sale, fifth, agri-recreation, sixth, agri-sports, seventh, agri-tainment, eighth, agri-therapy, and nine, cultural tourism. Within each specific category, activity and product and services are distinguished. So let's start with the first one, which is agri accommodation. Within each specific category, agri product and services are distinguished. The following categories of agri hotel services can be distinguished, like farm stays, cottage stays, agri hotel that we also call as motel, service, self-service beds, agri camping, special agri hotel services as well. Second is agri-food and beverages. In this, agri-food services are an integral part of agri-tourism. Four forms of agri-food services can be found. Home meal eaten by tourists together with the farmer's family, picnic meals eaten in the field, canteen that is separate place for the tourist,
who eat meals without the farmer's family but accordingly to the menu and timetable imposed by the farmers. Restaurant run by the farmers or food processing enterprises as well, which will provide meals not only for the holiday makers staying in a specific farm but also for the outside guest as well. The third one is primary agritourism. It comprises categories of tourist products and services that are directly related to the production process on a farm. The product and services of the primary agritourism include observation of the product of crops and livestock, observation of food and beverages processing, participation in the production of crops, animals, foods and beverages, also educational tours, farm, zoo, safari, direct contact with their domestic animal or the nature on the farm. The fourth one is direct sales. Due to the fast development of modern wholesale retail network whose goal is to sell mass product to as large several consumer as possible. There is a danger that local product manufactured in the small amount will disappear completely because there will be no effective market for them. Agritourism provide a market opportunity for such commodities through following form of different sales: direct sales of farm product, pick up your own sale, stand with agricultural product, farm or enterprise shops as well. The fifth one is agri sports. Within the agri sport, the following categories can be distinguished like walk and hikes, horse riding, sports requiring a large space, new generation area games, hunting and fishing as well. The sixth one is agritainment. This is kind of, you can say, as some entertainment can be classified by as so-called agritainment. The use of the term agritainment is justified by the fact that such entertainment is only available on farms and in the rural areas or possibly in the green areas in the city. Three categories may be included in the agritainment like group, namely visiting parks and gardens, agri-tourist excursions and outing, maize and soya mazes also. The seventh one is agri-therapy. Currently, agri-tourism offers at least four products and services of agri-therapy, namely as animal assisted therapy, therapy applying plant and animal specifics, aromatherapy, apitherapy, specific diets, and mini health resort as well. Now, the eighth and the last one is cultural tourism. According to the United Nations World Tourism Organization, that is UNWTO, cultural tourism is a movement of a person for especially cultural motivation, such as study tour, performing art and cultural tour, travel to festival and other cultural event, visit to site and monument, travel to study nature, folklore, or art and pilgrimages. Now, as you can see, the ethnographic product and services offered by rural community include historic farms, old farms, historic villages, museum of folk art and agriculture, folk family celebration and festivals, staying in a village characteristics by the specific folk character, that is dialect, art, attire and building, etc.
Therefore, the wide era of product, services, and importables indicate that the agri-tourism can offer a wide variety of services to the client. पंजाब भारत के कृषि प्रधान देशों में से एक है। किसान जहां खेतों में अनाज की पैदावार करते हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे कृषि उत्पाद भी हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं। ग्रामीण के क्षेत्रों में जहां इन उत्पादों की खेती की जाती है, वहां शहरों और दूसरे राज्यों से पंजाब घूमने आए लोग पर्यटक होने के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में भी इन फसलों की बिजाई और उत्पाद की जानकारी लेते हैं। शहरी नौजवानों के लिए अपनी सभ्यता और मिट्टी के साथ जुड़ने का एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। जहाँ वे अपने आप को कृषि व्यवसाय में शिक्षित करते हैं, वहीं अपने बुजुर्गों से वो बातें भी सीखते हैं जो उन्होंने कभी किताबों में नहीं पढ़ी। इस तरह से ये कृषि पर्यटन व्यवसाय के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। किमें लगता है खेत से आके? तो बढ़िया फील होता है, क्योंकि मैं जो ननएम्स कंपनी है, ये बात सबके नाल है, पूरा नाम है इसका ननएम्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें मैं जॉब करता हूँ, मैं किसानों को बीज के बारे में दसता हूँ। ठीक है। तो जैसे एज प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं भी उनसे सीखता हूँ। अगर जैसे कोई रोग आता है तो दवाई के बारे में, बीज कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है, तो वो सारी चीजें मैं उनको बताता हूँ। ठीक है। हाँ जी। कैसा फील होता है यहाँ आकर? यहाँ आकर देखो बहुत बढ़िया फील होता है, एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। इस प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है सबसे बड़ी होती है। आपको क्या लगता है सब लोगों को आना चाहिए यहाँ? लगता है सबको नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि ये ना किसानों की रोजी रोटी का मसला होता है। इसी से अपना अन्न सब्जी आदि सारा कुछ उगाते हैं और इसी से अपना सारा कुछ होता है। ठीक है। तो अच्छा लगता है आपको यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। नाम आपका? मेरा नाम इमरान खान। और आप कहाँ से है? मैं बेसिकली मेरा बैकग्राउंड तो पंजाब का ही था, बट अभी हम 30 साल से शिफ्ट हो गए थे मुंबई। अच्छा, तो आपका यहाँ आना कैसे हुआ? जैसे मैं अभी विजिट किया था पंजाब का, तो मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया पंजाब को, और हमारा तकरीबन जो बैकग्राउंड था वो खेती से रिलेटेड था, और मेरा काफ़ी लगाव है खेती बाड़ी से। तो मैं पंजाब की खेती बाड़ी देखना चाहता था, तो हमने फील्ड में आए, फार्म में आए, और आपसे बात हुई, आपसे मैंने मुताला किया, मुझे कोई फार्मर से मिला। आपको पता होगा कैसे खेत में सब्जी कैसे मतलब बीज बोया जाता है, कैसे उसे मतलब काटा जाता है, आपको पता तो होगा ना थोड़ा? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो पता है, कैसे इसकी बिजाई होती है, कैसे कटाई होती है, क्या इसका एजुकेशन कैसा होता है, तो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है। चलो आपको यहाँ हमारे पास ही एक फार्मर है हमारे, उनसे मिलवाते हैं आपको। ठीक, चलो चलते चलिए। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम शहबाज है। सर ये फार्मर में जो हम खड़े हैं आपका? हाँ जी। तो यहाँ आप हमें ये बताइए, कोई भी जो भी हम फसल उगाते हैं, इसका सिस्टम कैसा होता है, कैसे उगाई जाती है, कैसे काटी जाती है, हमें तफसील से बताएं। सबसे पहले तो इसकी खेत की बहाई होती है, फिर इसको तैयार करके इसकी बट बनाई जाती है, बट के बनाने के बाद इसमें बीज उगाया जाता है। उसके बाद निकलने के बाद इसकी गुड़ाई होती है, गुड़ाई के बाद स्प्रे भी होती है, पानी भी देते हैं, फिर ये फसल पैदावार होती है। इसका हमें ये मतलब है सभी फसलों का जो सभी मतलब सब्जियां हैं, जिनमें पालक, मेथी, गोभी, तोरी, तरह, खीरे, सभी मतलब सब्जियों का एक ही सिस्टम होता है? हाँ, वो अलग अलग सिस्टम होता है एक का, सभी एक नहीं होता। जैसे पालक है, मेथी है, अलग अलग तजर्बे हैं,
लेकिन जो खीरा होता है वो उसका पारा बनाया जाता है, जो गोभी है वो ये बट्टे बनाई जाती हैं। अलग अलग तजर्बे हैं हर एक बंदे के। मुझे ये बताएं, जो पालक है, जो मतलब पालक और मेथी है, ये कितने दिनों में ये मतलब मुकम्मल तैयार हो जाते हैं काटने के लिए? ये तो खेत के ऊपर निर्भर है। जैसे खेत में जान होगी, खेत में जो भी हम डालेंगे उसी के हिसाब से ये फसल तैयार होगी। बीच में ये पालक है, जैसे ये 30 दिन में तैयार हो जाता है, कोई 1.5 महीने में, कोई 2 महीने में, खेत के ऊपर निर्भर करता है ये। अच्छा, लेकिन मैंने ये भी सुना कि जो मतलब बारिश के मौसम में फसलें ख़राब हो जाती हैं, मतलब इसका कोई वो तो नहीं है, तो या बारिश का फसलों को फ़ायदा होता है? नहीं, कुछ देखो फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ये तो जैसे खेत दूनी होते हैं जहाँ पानी खड़ जाता है, अभी निकाल देते हैं तो फसल बच जाती है, नहीं निकालेंगे तो फसल मर जाती है। कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। ये हमारे ये टूरिस्ट हैं, मुंबई से आए हैं, इमरान खान इनका नाम। ये आपके पास इसलिए है कि इनको खेती बाड़ी से बड़ा लगाव है। इनके जो पुरख थे वो भी खेती बाड़ी मतलब करते थे, वो इसलिए आपके फार्मरों हम चले आए कि हमको बताया जाए कि इसका प्रॉपर प्रोपेगेंडा क्या होता है। इसका आपको इसका जलवायु कितना होना चाहिए, कुछ आइडिया? जलवायु तो उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे अभी तापमान घटा हुआ है, जो सब्जी हम लगाते हैं उसको भी पन्ना लगाना पड़ता है अभी, फिर बीज निकलता है। हाँ, अभी जब टेम्परेचर बढ़ जाती है फिर तो पन्ने की लोड नहीं पड़ती, फिर तो वैसे ही निकल आता है धूप से। तभी मैंने पूछा था, आजकल देखने को मिल रहा है काफ़ी पन्नी वगैरह लगाकर खेती, पता नहीं उसमें क्या लगाते हैं। उसमें क्या क्या लगाते हैं अभी जो करंटली चल रहा है? बिजाई किस चीज़ की हो रही है अभी बिजाई करेला, तोरी, ककड़ी, शिमला मिर्च, देसी मिर्च, रासफीन और भी बहुत ज़्यादा फसलें हैं, जैसे कद्दू है, चपन, गैया है, मारू पेठा है, बहुत चीज़ें हैं और भी। मतलब ये मतलब पन्नी लगाकर सभी तैयार कितने दिनों में तैयार हो जाता है? ये कम से कम 3 महीने तो लग जाते हैं। 3 महीनों में तैयार हो जाता है, मुकम्मल तैयार हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी इन्फॉर्मेशन आई है, आपके पास बहुत शुक्रिया। मैं तेरे पिंड दी हवा सोनिया, मैं तेरे पिंड दी हवा सोनिया। बहुत सारे नौजवान पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी काम कर रहे हैं। खेतों में सब्जी उगाना और उसके साथ साथ शहरों से आने वाले अपने साथियों को भी इसकी तरफ शिक्षित कर रहे हैं, जो कि पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। कृषि करे भारत बढ़े भारत। गन्ना कृषि उत्पादों में से एक मुख्य उत्पाद है, जिससे कि गुड़ बनाया जाता है। गन्ने का रस निकाल के उसको आग पे पका करके उसको गुड़ में तब्दील किया जाता है। जिस जगह पे ये प्रक्रिया होती है उसको कुल्हाड़ी बोला जाता है। हाँ जी, आप अज दिखाने भी कुल्हाड़ से किवें गुड़ बनता, बाकी पौधे भी कौन कौन इतने देखने आउंदा किवें। बाबा जी ने बोलते हैं, सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल भाई। आ देखो पहला इंजन ने आह कुल्हाड़ी चलाउणी चलूगा तो कुल्हाड़ी चलू, गन्ना वो पिया, वो गन्ना वो दे के रस निकलू उत्थे। ठीक है जी। अच्छा जी, इतों वाले फिर कड़ाही जाऊगा, उधर कड़ाही हाँ हाँ आ दिखा दी गई है, कड़ाही जाऊगा उधर। ये मतलब जाली राही छण के जाता ना जी? हाँ, ये तो ढकी हुए ने उत्तों कोई चिड़ी बैठ ना करे, हो रहे ढकिया आ रहा। अच्छा जी, खान खातर ना अपनी तरह कर। हाँ जी, हाँ देखो आ चिड़ी उड्डी जाने, कोई बैठ नहीं करके। ठीक है, जाली ता रखी है उतों जानी जाएगा। आओ गन्ना आप लावे, इंजन चलू, हाँ जी, फिर ये कड़ाही चलू, फिर वो रस उत्थों निकलू। ठीक है जी, ऐ नाली साई ये कड़ाही से जाऊ, वो कड़ाही से जाना। ठीक है जी, हाँ फिर उधरों झोंका लो। ठीक है जी, आ जाओ रे आ जाओ। ये चलना नाली साई आ जाना, उत्थे चलना जब फिर झोंका लेना उधरों आप ना, फिर रात काटूंगा ये मैन काटना।
हाँ मैल कटदा ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਦੇ फिर वो तीजे च गुड़ बनूगे। ਅੱਛਾ ਤੀਜੇ ਫਿਰ ਗੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ वो धोखा झोकदे सानू बालन थल्ले ਠੀਕ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਿਆਗਾ ਪਾਰਸਾ ਜਿਹਾ हाँ हाँ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸ दोहरा कहंदे इहनू दोहरा इहदे च कड्डू ਠੀਕ ਆ फिर इत्थे चंड के बना के गुड़ इधर ठंडा हो ठीक है ठंडा होना आ ठंडा होया फिर ਇਹ ਅੱਛਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ आ देख लो खा के आ तत्ता पूरा खा के देख लो ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਤੱਤਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਸੀਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਆਦੇ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੱਧ ਮਾਤਰੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤੱਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਸ ਤੋਂ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਜੂ ਬਾਦਾਮ ਕੋਪਾ ਦਾਖਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਰੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਟਿਕੂੜੀ ਬਣਾ ਉਹਦੇ ਰੱਖੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਚਣ ਖਾਤਰ ਆਲਸੀ ਦੀ ਆਦਾ ਪਿੰਨੀ ਗੁੜ ਦੀ ਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਦੇ ਪਰੇ ਉਹਨੇ ਬਾਲਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਦੇ ਧੋਖਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪਕਾਉਣਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਛੇਦਰੋਂ ਦੱਸ ਦੋ ਆ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੁੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਵੀ ਗੁੜ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰਾੜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ भैया हम जम्मू से ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ भैया हम पहले पंजाब रहते थे हम जम्मू चले गए थे ये आप इधर क्या कर रहे हो ऐसे पूछ रहा था मैंने इनके बारे में सुन रखा था कि ये ऐसे बनता है आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो चलो मैंने सोचा कि देख लें थोड़ा खरीद लें गुड़ बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके आपको पता है भी कैसे बनता है गुड़ क्या पहले नहीं पता था भैया मैं अंदर देख कर आया हूँ पहले अब वो बोले कि बाहर घूमना है तो हम देखने हैं यहाँ आपको कैसा लगा देख के भी कैसे बनता है और खा के कैसा लगा गुड़ हमने वहाँ गर्म गुड़ पड़ा था वहाँ खाया बहुत अच्छा लगा बहुत सफाई है इनकी बहुत अच्छा लगा मुझे हाँ जी तुझे आप और क्या बताना चाहोगे इसके बारे में क्या कहना चाहोगे भैया ऐसा है कि हम अभी खाली इनके साथ रहेंगे 5-4 दिन हमारा यहाँ पास ही में घर है तो मुझे पहले तो पता नहीं था कि यहाँ है मैं अभी 2-3 दिन ही आया हूँगा तो मैं भी इनके पास आऊँगा 5-4 दिन लगातार ठीक है तो मैं उनसे सीखूँगा कि कैसे बनता है ये अच्छा और हमें बनाना पड़े हम बना सकते आप और क्या क्या सीखोगे इनसे भाई यही सीखे ये कैसे रहते हैं ये कहाँ से आते हैं काम करने यहाँ पर और इनका मालिक कौन है इनके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कितना हमें एरिया चाहिए कहाँ मशीन लगेगी ऐसा कुछ हम सब सीख कर ही जाएंगे ठीक है भैया और हम इनका लाइफस्टाइल जो भी इनका लाइफस्टाइल है हम देखेंगे और सीख कर जाएंगे ठीक है आपका धन्यवाद ਘਲਾੜੇ 'ਚ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਘਲਾੜੇ 'ਚ ਗੁੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ कुछ देखा भी किवें ਹੁੰਦਾਗਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ ये किसान मुफ्त से खिलाई देकर ग्रामीण कृषि पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं उसमें वृद्धि कर रहे हैं उनकी सरकार की तरफ से माली सहायता की जाए ताकि पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का जीवन स्तर और ऊंचा उठ सके अगर नौजवान इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं तो हमारा भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का नैतिक फर्ज बन जाता है। हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यटक के रूप में आए और शिक्षित हों। क्या हो रहा है ये आप क्या कर रहे हैं? ये ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਬਸੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਘਰ ਆਇਆ है ਤੇ ਇਹ ਸਰੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ है ना जिस पे फूल है ये इसका नाम क्या है? ਇਹ ਸਰੋਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਹੈ ਸਰੋਂ का तेल सरसों का तेल हाँ नाइस वाओ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਤੇਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ। और ये सब क्या कर रहे हैं? ये किसके लिए?
ਇਹ ਜਵੀ ਵੀ ਹੈ ਬਰਸੀਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇਗੇ, ਉਧਰ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਆਪਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਵਾਓ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਧਾਰਾ ਚੋਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੱਖਣ बनाने, दही बनाने, जो यूज करते हो, खाने हो। बटर बोलते हो जिसको आप? बटर बोलते हो। वो सब आप घर पे करते हो? हाँ जी घर पे करते हैं। हाथ से दूध लेते बताड़ी कैसे। हम भी कभी आएंगे आपके घर। हाँ जी चलो। हाँ जी चलो। नाइस टू मीट यू। उधर साथ कनक भी नाइस टू हाय। थैंक यू। मैं जब दुनिया तो जावा मुड़ फिर दोबारा आया, मैं जो भी जून हटावा मेरा देश होवे पंजाब।